अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश कीज़ में आपको खुशामदीद। आज हम यूनिट नंबर 14 पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रेड 12th का, और इसका टाइटल है लिंकन गॉर्ज अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। अब जो पिछले साल की इंग्लिश की बुक थी, जो पुरानी बुक है, उसके अंदर भी ये लेसन था और मैंने इस लेसन को मुकम्मल सॉल्व किया था। तो इसकी जो रीडिंग है ये आज मैं आपको नहीं करवाऊंगा। रीडिंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया होगा और इस वीडियो के आखिर में भी आपको जो है वो इसका लिंक मिल जाएगा। तो रीडिंग आप इसकी वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगा रीडिंग। आपने वहाँ से लाजमी उस वीडियो को देख के वहाँ से आपने इसकी सारी रीडिंग कर लेनी है, और जो इसकी ग्रामर है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज के सेशन में हम करेंगे। लेकिन रीडिंग आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने रीडिंग लाजमी देखनी है। डिस्क्रिप्शन को आप चेक करें ना, तो उसके अंदर से आपको इसकी रीडिंग का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका ग्रामर का पोर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ग्रामर में हमारे पास एक्टिविटी ए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। The adjectives, verbs or nouns given in the bracket should offer clues. He is a man of strength. Strong से हमने abstract noun बना लिया strength. The people in this part of the country live in poverty. Poor से हमने बना लिया poverty. Cruelty to animals in a punishable offense. Cruel से हमने cruelty बना लिया. He is on a pilgrimage. ज़ियारत. Pilgrim ज़ियारत को बोलते हैं pilgrimage, ज़ियारत पर जाना. He is on a pilgrimage to Mecca. I have great प्लीज से प्लेयर, आई हैव ग्रेट प्लेयर टू वेलकम यू। चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, चाइल्ड से चाइल्डहुड। और वेस्टेज शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, वेस्ट से हमने वेस्टेज बना लिया। एज अ पेरेंट माई चिल्ड्रंस सेफ्टी, सेफ से सेफ्टी बना लिया। एज द सन वेंट बिलो द होराइजन, डार्कनेस एनवेलप्ड द प्लैनेट, डार्क से डार्कनेस। देर इज नो एंड टू हिज विकेडनेस, विकेड से हमने विकेडनेस बना लिया। एक्टिविटी बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्लैंक। My friend did not respond से my friend did not respond to my letter. He behaved strangely, strange से strangely. Teachers exhaustion, exhort से exhaustion. Teachers exhaustion had great effect on students. He substanced, substance से substanced his point with valid arguments. Greedy people will never get any satisfaction. Satisfy से satisfaction in life. I don't think that there is any necessity for you to come again. Necessary से necessary से necessity. Though his early attempts were not successful, he did not lose heart. I have memorized that song. Memory से memorized. The teacher permitted her to go home early. Permission से permitted. Hubble made many astronomical discoveries. Discover से discoveries. Activity C है, complete the following sentences using conditional sentences type 3. Change the form of the verb if required. If you had asked me, I would have told you the truth. He wouldn't have got lost if we had a map. If you had had a daughter, I wouldn't have called her chubby doll. If the shops had been open, they would have bought something. If Amreen had known that, she would have come back early. If he would have sung a song if somebody had played the harmonica. If I had lived in Spain, I would have learnt Spanish. If it had rained yesterday, we would have stayed at home. जगह यहाँ पे नहीं थी तो मैंने आगे लिख दिया, जितनी जगह यहाँ पे थी लिख दिया, बाकी आगे। If we would have stayed at home. I would have gone if Amber had invited me. If Amir, अच्छा, if my son had studied medicine, he would have become a doctor. If you had come early, you would have seen a comet. What Mary would have done if she had been late for school. अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी डी है, टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स। सेंटेंसेस हैं और उसके सामने तीन ऑप्शंस हैं, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। द चिल्ड्रन वोर देयर डर्टी बूट्स, सिंपल सेंटेंस है। इट वाज टाइम फॉर बेड येट इट वाज स्टिल लाइट आउटसाइड, कंपाउंड सेंटेंस है। द फ्रंट डोर वाज लॉक्ड सो शी एंटर्ड थ्रू द बैक, कंपाउंड सेंटेंस है। दे टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स व्हेन दे विजिटेड स्वात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। After the show began, he sat very quietly, complex sentence है। The girl was wearing a red dress, simple sentence है। He was playing on his computer, simple sentence है। Yahya Khan would like to play for he is best player on the team, complex sentence है। Before the bell rings, the students lined up at the door, complex sentence है। We turned off the lights, simple sentence है। उसके बाद we turned off the lights and we went to sleep, compound sentence है। We turned off the lights after our mom told us to go to sleep.
ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. आई एंजॉयड द प्ले बट आई डिड नॉट लाइक द एंड. कंपाउंड सेंटेंस है. Jean was excited because her poem was greatly appreciated by all. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. हाउ फैबुलस आवर हाउस लुक्स विद ऑल द डेकोरेशन. सिंपल सेंटेंस है. विल यू प्लीज ड्रॉप मी एट द कम्युनिटी सेंटर. सिंपल सेंटेंस है. इवन इफ आवर टीम विंस दिस मैच वी मे नॉट मेक इट टू द फाइनल. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. टेक द फर्स्ट राइड आफ्टर 500 मीटर्स. सिंपल सेंटेंस है. डॉक्टर आसिफ प्रेस्क्राइब्ड सम पिल्स एंड ही टोल्ड द पेशेंट टू हैव अ वीक्स रेस्ट. कंपाउंड सेंटेंस है. डैड मेट अ मैन विद होम ही यूज्ड टू वर्क. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. हमने इसकी ग्रामर कर ली. अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट इज द नैरेटर्स जॉब एट द पर्पस ऑफ हिज जर्नी. व्हाट फिजिकल कंडीशंस परसुएड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स. द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी वर्क्स एज द चीफ ऑफ मटेरियल्स डिपार्टमेंट एंड ही इज ट्रैवलिंग टू रीच एट द मटेरियल डिपो. It is part of his job to monitor the work and to check the material used in construction. He also must ensure that every worker is at the place of duty. He had been traveling for a long time and the terrain was very rough and tiresome थका देने वाली. He was feeling hungry as well. These circumstances persuaded him to rest for a few hours. Question number 2 is that how old is Chengyu? What does he respond when the narrator asks why isn't anyone home? Chengyu is 7 or 8 years old. The narrator felt very strange to find such a little boy alone. When narrator asked him why isn't anybody home, the boy replied with a question. Aren't I anybody, uncle? He rose and walked towards the narrator with his chest extended as if he wanted to say, not even I am somebody, I am a grown-up somebody. Question number 3 is that what work do Chengyu's parents do? Chengyu वो जो बच्चा था उसके पेरेंट्स क्या करते थे? Chengyu's parents were laborers of lower middle class. His father used to dig mountains with dynamite chargers and his mother was a traffic constable. Question number 4 is that what job has Chengyu been assigned? आंसर इसका ये है कि he has been assigned the job to look after his baby sister. Question number 5 is that what explanation does he give for refusing the narrator's advice to go to sleep? He refused his advice to get some sleep and told him that he has been advised by his parents that a man should never leave the post. Question number 6 is that what does the narrator do in the final paragraph? What does he realize is waiting for him? When the boy said, Papa and Mama say a man should never leave his post, the narrator got emotional and hugged him tightly. He pressed his cheeks against him. He rose, buttoned his coat, pulled his hat down, left the cave and walked down the path towards his workplace because his post was there. He realized the lesson that was given by the parents of Chengyu. Question number 7 is that what sort of child is Chengyu? What attitude does he display towards his parents and his responsibilities? So Chengyu is a boy of 8 years. He is an obedient, active, smart and quick-minded child. He looks after his baby sister vigilantly like an adult in the absence of his parents. He is devoted to his job, therefore he denies getting some sleep. He sacrifices his personal comfort for the sake of duty and commitment. He takes full responsibility of his task and tries to accomplish his duty with utmost sincerity, dedication and professional spirit. Question number 8 is that what change in mood or outlook does the narrator experience in the story? What causes the change? The storyteller is the chief and his duty is to visit the site where the work is being carried out, but he stays for a short period due to extreme cold. He says that he will not be late if he reaches by 10 o'clock in the morning. Therefore, he visits the boy and tries to get some sleep. But there he experiences a new thing. He is touched by the actions of little boy and realizes that a man should never leave his post. He is motivated and walks towards his post with a changed heart. Question number 9 is that what ideas about work does the story convey? What else does the story suggest is valuable? The story conveys that work is the prime responsibility and during work a man should follow the instructions of the boss. And the main idea about the work is that a man should not leave his post and this is the valuable message suggested by the story. तो आज हमने चैप्टर नंबर 14 जो है ये भी कर लिया. रीडिंग आपने लाजमी देखनी है. रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. पहले आप जाके बेशक रीडिंग को देख लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, इसको सेव कर लें और जब आप रीडिंग कर लेंगे तो उसके बाद आके आपने इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं. अगर आपको ये तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं ये PDF फॉर्म में चाहिए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इंग्लिश कीज़ का जो स्टडी ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन करने का तरीक़ाकार और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है.
वहाँ से आप मेरा नंबर लेके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंग्लिश क्विज़ के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।